Today we are going to discuss about computer networks. So computer networks are basically in computer networking we will discuss about how we are connecting a computer each other and how we are going to share different like printer, scanner, how SMTP or IPTCP works, how email work, how we configure servers. So a computer network is an interconnection of two or more computers that are able to exchange information. So even in our office or in our home, we interconnect more than one device like mobile, computers, laptops, sometimes using Wi-Fi, or in our office, sometimes using Ethernet wires. So that's called network or networking. Even when we have only one printer available in our office, and almost all computers can access that printer and can use that printer, that's a computer networking or computer network. So when we have to share resources or share files between computers, that time we use networks. So maybe sometime we can connect using any physical wire, or maybe using Wi-Fi, or maybe this such type of network maybe in our small network in our home where we are connecting mobile and laptop, or maybe in office where we are connecting more than 20, 30 or 50, or even in some organization more than 400, 500 computers. So that one is computer networking. So computer network may be a small size inside any building using our normal Wi-Fi or normal LAN, or maybe even our internet. It's just a big networking. It's a network of all network. When we are accessing any Facebook or any web page, that time also it's mainly network, internet, where we are connecting to a server. That server is hosting that HTML files that we are browsing using web browser. That one is also a part of networking or network computer network. So when we are accessing any file or printer, uh, when we are sending any command to printer, when we are accessing any file, HTML file, Facebook or any web page, that time it's like a complete cycle. First, we are sending a request. So that time suppose if two computers are connected, then one computer will act as a client and one computer act like a server. So when we are sending any request to server, that server will take that request and will serve something. That's why it's named server. So in that case, suppose in Facebook, it will serve a HTML page, web page, and as a client, you will take that as a response. Or suppose if in our office, our two laptops or computer connected to each other, and I want to access any file, that one is in Apurva's laptop or Raghav laptop. That time also, if I want to access that laptop, that time we will send a request to that laptop. And that laptop will respond back that file as a server. So if you will look into this whole computer network concept, it's basically mainly built for sharing something. And any computer at same time may work as a client also, or may work as a server also. So suppose if I'm accessing Raghav laptop file, that time if I also shared my folder with Raghav, that time Raghav can also work as a client and my laptop can also work as a server. The same time, if I'm accessing Raghav file, that time my laptop will work as a client and Raghav laptop will work as a server.
So the main advantage of computer network is communication. So we can communicate to each other, means in different laptop, different computers, different printers. We can share information. Even we can store. Suppose if I have a file, I want to directly store that one into someone else's computer, and if it's available inside my network and shared to me, permission is given, then I can directly share that file into Raghav's laptop. Even a lot of software can be shared using Talent. We can access remote programming console also. We can share file, we can share data, we can share information. Even in network, we can share hardware also. In our normal day-to-day life, if we have suppose a router capable of sharing SD card, that time at single place, single hardware, we can provide SD card. In that SD card, we can store music or movie files that can be accessed by every laptop or computers inside network. So that time we are sharing hardware also. That hardware is SD card. So using computer network, we can share files, we can resource share like scanner or modem or printer. In a typical office setup, we cannot provide everyone a printer. That time we have to share that printer or scanner with everyone. In that case, we are using network, we are using computer network topology or protocol, and we are sharing printer or modem with everyone. And like our old time Yahoo Messenger or email or even FTP, that also only possible because every computer is interconnected. That's why we are able to use email or instant message like Yahoo Messenger or Google Chat. And based on different permission type, we can fine tune accessibility also. Suppose in my laptop, I can give access to Raghav to share any file with me or write any file in my folder, but we can also deny any access to anyone else to share that into my shared folder or write in my shared file. So in any typical office, when we have to share a printer or when we have to interconnect computers to each other, or even when we have to set up any server, when we are hosting something. Suppose if right now we are hosting one Moodle, one web learner platform online. For that purpose, right now we purchased some hosting capability from some reseller. But suppose if it's very successful and we have to host it in-house, that time also we have to purchase some server, some hardware, and we have to provide internet connectivity and some kind of networking. So anyone else in this world can access using internet, can access that hosted files from our server. So we have to understand a different type of networking and different type of topology of network. But basic level, when we are defining any network and when we are designing any network, we are designing based on size of network, connection, and network topology. So size of network means in my house, if I have to design one simple network for me or my family, that time it will be a personal network. Mainly, I will connect 2-3 laptops and 1-2 laptop plus mobile plus some maybe tablet or maybe nowadays smart TV or smart refrigerators. For such type of networking, we will use a simple topology and simple network. And in normal current time, simple Wi-Fi is more than enough. So we will purchase one 500 internet connection, and after that, they will provide one cable with RJ45 plug
and we will purchase one router with Wi-Fi capability, and we will configure that Wi-Fi network, and almost every our device will connect to that Wi-Fi. And if we will enable sharing, then we can enable sharing between our mobile or laptop. And based on connections, so sometimes maybe sharing type may be a very large file like videos, like YouTube. Suppose in office, if we are media company and we are editing a large number of video files, and we have to provide a network capability. That network capability, anyone can access that file or download that file. Then we have to think about file transfer protocol, FTP type of protocol, and we will provide a different type of network for such type of work. And also nowadays we are using Wi-Fi for normal purpose. But even in our office, if you will see, we set up a server inside our pantry, and we have a lot of wires, a lot of connection. So even in network topology, we have a different type of way to connect. Even if we are using wire to interconnect to a laptop, one easiest way is we will take one wire, maybe 5 meter, 10 meter. We will provide a male RJ45 plug on both sides of that cable, and we will just connect two laptop. That's the simplest way of connecting to computers or laptop. A simplest way of computer networking. That topology is called bus topology. So in that way, we can connect two laptops. But suppose if we have to connect more than two laptops, then in normal setup, if we are using wire, we are providing a router, centralized place from where we are routing everything. That one is the star topology. So we will discuss about a different type of topology also, network topology, their advantage and disadvantage also. Any doubt, Apurva? Aditi, Akirti? Any question? No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है? सर ये सब सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही होता है, मतलब कि we need a require a Wi-Fi connection or internet connection only for sharing or for using other computers or offline भी होता है? नहीं, नॉर्मल ऑफिस सेटअप में हमारे पास जो आईटी गाइज होते हैं वो इसमें नेटवर्किंग में उन्होंने कोर्स कर रखा होता है, या नॉर्मली अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो ये देखो इंटरनेट कुछ भी नहीं है, वो एक नेटवर्क का कनेक्शन ही है। अभी अपने ऑफिस में मान लो, अगर अभी हम तो नॉर्मली हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, जिस तरह का कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर हम फिजिकल कनेक्शन पे हैं, RJ45 वो वायर हमारे हार्ड डिस्क के साथ है, उससे कनेक्टेड है, हमें कोई मतलब नहीं है कि इंटरनेट है या नहीं है, आपस में ही हम एक इंटरनेट की तरह ही काम करेंगे। पूरा का पूरा एक जो ऑफिस है वो आपस में कोई भी फाइल शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन अगर कहा जाए तो हमारे लैपटॉप में DNS वो सिस्टम होता है, डोमेन नेम सर्वर होते हैं, और अगर इवन हम अगर फाइल होस्ट कर रहे हैं इंटरनली, जिसे हम इंट्रानेट बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आगे, तो इंटरनेट हो ना हो, इवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास इंटरनेट होता है, जिससे कि हम जो लोकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते होते हैं। अभी प्रॉब्लम वही है कि जो राउटर हम यूज कर रहे होते हैं नेटवर्क में, या वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, वो बाहरी वर्ल्ड एक्सेस के लिए वो ऑनलाइन उसे चाहिए इंटरनेट कैपेबिलिटी। लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन, जब हम जैसे इन्फोसिस वगैरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और हजारों बेंगलोर वगैरह में एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक कंप्लीट छोटी सी दुनिया उनकी एक पूरी इंटरनेट इंट्रानेट होती है बड़ी कंपनीज की, जिसको कि इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो लोकली आप कभी भी कुछ भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, और ऑलमोस्ट वो एक ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो इंटरनेट ही होता है। समझे जाएगा? जी सर, हाँ जी समझ। अभी एग्जांपल के लिए जैसे अब तो लैपटॉप आ चुके हैं, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस टाइम में थे और हमारे पास डेस्कटॉप होते थे, और पूरी हॉस्टल या अभी भी जाओगे IIT वगैरह में, जितने भी हॉस्टल्स में इस तरीके से जो नेटवर्किंग होती है, वो आपस में कुछ भी शेयर कर सकते होते हैं, किसी भी तरह का नेट हो ना हो, अगर उस तरह का चैटिंग सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल, वो आपस में सॉफ्टवेयर में चैट कर सकते होंगे।
और ऑलमोस्ट वो कुछ भी कर सकते हैं जो इंटरनेट पे नॉर्मली हम कर सकते होते हैं। बस वही है कि वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि एक सर्वर अगर है जो आईआईटी कैंपस की इनसाइड है और उनके लिए है जो हॉस्टल के लोग या जिस नेटवर्क में है, तो इंटरनेट होना हो आप उसे एक्सेस कर सकते होते हैं। ठीक है सर। कोई भी ऐसा इंटरनेट या जिसे हम इंटरनेट जैसे बोलते हैं, जैसे सर्विस क्लाइंट वगैरह, जिसका एक्सेस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है, वो इंटरनेट कहलाता है, जिसका लिमिटेड एक्सेस हो। प्रोटेक्टेड एक्सेस के साथ होता है ना, उसे हम इंट्रानेट बोलते हैं, और इसे जो हम नॉर्मल जो पूरे पब्लिक है पूरे वर्ल्ड के लिए उसे इंटरनेट बोलते हैं। समझ में आया? कोई हाँ जी कंफ्यूजन सर। है तो पूछो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही हम बात करते हैं ना क्लस्टर होस्टिंग के लिए, या फिर होस्टिंग की बात आती है, या फिर हम क्लाउड की बात करते हैं, तो अगर हमें नहीं पता है नेटवर्क वगैरह, क्लाउड, क्लस्टर, ये सब की बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। आधा जरूरत है हमें बोल रहे हैं। तो नॉर्मली बेसिक लेवल पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, लैन, मैन और वैन। लैन, मैन एंड वैन। लैन the basic one, local area network. It's normally inside any building or office. Maybe maximum size maybe 100, 200, and it's particular for one building or office, where we are providing a centralized router and or centralized Wi-Fi, and all the computers are connected to that single network. That's called local area network. Even in our office, internet connections are means not internet connection, at all the wires, RJ45 or all Wi-Fi are local area network. So any small, even in house, if we are using Wi-Fi system, Wi-Fi router, then it's a local area network. So LAN is a computer network widely used for local communication. LAN connect computers in a small area like room, building, office, or campus. And sometimes they may be up to a few kilometers, like Infosys Mysore campus. LAN may be up to 1 kilometer. Yes, completely depend on any big universities. And they are privately owned network to exchange information. So LAN is local area network, locally. In LAN, we have star, bus, and ring type of topology. Topology is the way, means how you are going to connect your laptops or computers. And it's very important based on your topology or how you are connecting your laptops or computers, your internet speed or reliability or protocol will depend. So if you have a LAN connection, then speed will be 10 Mbps to 100 Mbps, or means normally it's always depend upon your LAN card, your hardware. So any confusion on this line, Aditya, Akirti, LAN run at speed of 10 Mbps to 100 Mbps? So why such type of very high speed? Because the only limitation is hardware limitation. You connected two laptop and only you provided wire or router, and whatever the limitation of your LAN card will be the limitation of speed between communication between these two computer LAN. And in same LAN, we have a different family. So if you are using any Wi-Fi system, then it's WLAN, wireless local area network. We have one more type, WAN, but it's completely different. It's WLAN. It's a Wi-Fi LAN, Wi-Fi local area network. But for all practical purpose, whenever we are saying LAN, it may be normal computer communication, means normal wire-based LAN or Wi-Fi based. So it's a this image represent a simple setup of LAN.
like our office, where we have one centralized router, different computers, and one printer. So in this one, if you can see, any user can give a print command, and this printer will print. It's the main benefit of computer networking. As this name suggests, so if you have one city, like you have to provide network for complete Bangalore, or even a small district like Samastipur, or any place, so more than like 10 kilometer range, that time it's a man. It's almost same like LAN, but the main thing is distance. So distance between two computers will be very long, means maybe 10 kilometer, 15 kilometer. Normally it's cover a complete city. So when we have already WAN, then why we are going to provide LAN? Or when we have LAN, then means normally why again we are defining WAN? So when we are using LAN, we have some limitation due to hardware, that after some distance, signal maybe may means degrade its quality. Signal noise maybe may add up. So when we are designing MAN, that time we are also providing repeater and signal booster. So in WAN setup, it's same like LAN, but with noise signal, noise cancellation, booster, and repeaters. And normally it serve a large audience, and maybe cover distance up to 30 to 50 kilometers. So one example, such type of example is cable television network. But why it's mentioned cable television? But if in sometime in some state or some city, same your cable network will also provide you network, internet access also. And suppose if you are in Kerala and you have a TV connections from AsiaNet, then same cable will also provide you internet connection also. They will provide you one modem. They will provide you one special plug. In same plug, you can connect your TV also, and from same plug, you can connect your laptop or computer also. That time, using same complete CT cable, they are providing this internet connection or facility also, or even sometimes they provide internet facility also, intranet. That one is WAN, MAN, sorry. Any question in MAN? अदिति, सर रिपीटर्स क्या होता है? क्या चीज? ये आपने बोला ना कि मैन हैज रिपीटर्स, बूस्टर्स एंड नॉइज कैंसलेशन. अभी कुछ टाइम पहले तक आप जैसे अपने ही घर में आप जब जाती हो और वाईफाई आप कुछ जाती हो ना दो रूम के बाद, या किसी नीचे फ्लोर पे या बाहर गार्डन वगैरह में, तो सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं. तो आप अगर अभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाओगी तो आपको एक वाईफाई बूस्टर भी मिलेगा, जो कि रिपीटर भी बोलते हैं, या वाईफाई रिपीटर. वो सिग्नल्स को कैच करने के बाद और फिर से उसे और बूस्ट करके, या बोलो कि फिर से वो रिपीट करेगा सेम सिग्नल को. आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपके पास एक रेडियो है, जिसे हम पहले न्यूज गाने वगैरह सुनते थे, और उसका साउंड जो है बहुत आगे तक नहीं जा सकता है. तो अच्छा नहीं, आप ऐसे समझो कि मान लो राघव आपको कुछ बोल रहा है और आप इतनी दूरी पे हो कि आप उसे सुन नहीं सकती हो, तो बीच में एक और कोई शख्स है, कोई और पर्सन है जो राघव की बात सुन रहा है और फिर से उसे और चिल्ला के आपको बता रहा है.
तो वो रिपीटर है, वो एक हार्डवेयर होता है जो सिग्नल को लेता है, नॉइज को थोड़ा कैंसिल करता है और सिग्नल को फिर बूस्ट करता है और आगे से रिले कर देता है। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया ना? यस सर। या फिर आप सेम वैसे समझो ना कि अब हमें पता है कि एक वायर जो है सो वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ही दे सकता है सिग्नल। तो 2 किलोमीटर के बाद हम कुछ ऐसा फिर से एक और हार्डवेयर लगाएंगे जो उस सिग्नल को फिर से लेगा और सिग्नल जैसे आप इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ी होगी कि मॉड्यूल डिमॉड्यूल होते हैं, उस सिग्नल में क्या करेगा कि फिर उसके पास पावर सिस्टम होंगे, उससे पावर लेगा, सिग्नल को नॉइज कैंसिल करेगा जो अगर है तो फिल्टर यूज करके, और उसे फिर से सिग्नल को बूस्ट करेगा और फिर आगे के वायर में रिले कर देगा। तो इस Yes, तरीके sir. से वो रिपीटर यूज किया जाता है। तो जब आप 50 किलोमीटर जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे फैक्ट्री बोल रहे हैं, वेयर हाउस बोल रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर्स हैं, तो इनके बीच जब हमें करवाना हो, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे ये वैन यूज होगा। नॉर्मली अभी इस तरह की चीजें कम है पर फिर भी है। और नॉर्मली जब हमारे पास सर्वर फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, जहाँ हम ढेर सारे सर्वर रख रहे होते हैं, जहाँ पे हम होस्टिंग वगैरह सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या AWS वगैरह जहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइड कर रही होती है, वो पूरा का पूरा उनके पूरे शहर में वो डाटा सेंटर बने होते हैं, वहाँ इस तरह की चीजें बिल्कुल कॉमन है और होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क तो पता ही होगा, हम सभी यूज कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज बेसिकली इंटरनेट। जो आकृति अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो कुछ नहीं, बस वाइड एरिया नेटवर्क है, जहाँ सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जितने भी हैं वर्ल्ड में। So WAN is a network that connects computers over long distance like cities, countries. WAN use public, lease or private communication link. WAN use telephone line, satellite link, radio link. तो अब आपको पता चल गया होगा आदित्य, आकृति, अपूर्वा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे बना है, या फिर इंटरनेट है क्या आखिर? एक बार बता दो सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लो एक स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव है, ठीक है, उसमें कोई एक 10-20 कंप्यूटर्स थे। अब गांव वाले ने बोला कि भाई उस टाइम में मान लो कि एचडी कार्ड महंगे थे, किसी एक के पास कुछ म्यूजिक था, कुछ था, सारे लोगों ने बोला कि भाई नहीं मुझे गाने सुनने हैं। उसने बोला ठीक है, वायर लाओ और आपस में कनेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि गांव वालों ने आपस में कनेक्ट कर लिया सारे कंप्यूटर्स को। अब जब चाहे वो एसडी कार्ड किसी एक के कंप्यूटर में लगा हुआ है, उसने शेयर कर दिया, हर कोई गाने सुन रहा है, मजे कर रहा है, सारे लोग खुश। अब ये बात दूसरे गांव में भी पहुंच गई, वो गांव वाले भी आए, पूरी मीटिंग हुई कि नहीं अब हमें भी चाहिए, हमें भी सुनाओ। तो बोला कि ठीक है, आप अपने गांव में भी ऐसा एक नेटवर्क बनाओ, और जब 2 नेटवर्क ऐसा बन जाएगा तो आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब वो गांव वाले भी ने भी अपना सारा लाया, वायर वगैरह खरीद के उन्होंने आपस में कंप्यूटर कनेक्ट किया, और फिर इन गांव वाले के भी जो नेटवर्क थे, दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया गया। अब वो गांव वाले भी खुश, ये गांव वाले भी खुश। अब लोगों के पास पैसे आए, कुछ और गांव वाले जो उसी गांव के कुछ और मेंबर्स ने बोला कि मेरे पास भी एचडी कार्ड आ गया है, मेरे पास भी गाने हैं, मेरे पास भी मूवी है, मैं भी डाल रहा हूँ। तो सारे लोग भी जो है वो एक से ज्यादा लोगों ने शेयर करना स्टार्ट किया। सब सारे लोग जिस चाहे जो चाहे गांव में गाने मूवी सुनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा शेयर कर रहा है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन म्यूजिक शेयर कर रहा है, उसके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो हर कंप्यूटर का एक नाम दिया गया, तो कंप्यूटर का नाम तो वही है होगा फिर मशीन की तरह, याद रखना मुश्किल था। तो लोगों ने बोला कि जिसका कंप्यूटर है चलो उसके नाम पे ही हम डाल देते हैं।
तो अब क्या हुआ कि हमारे पास एक नाम हो गया और उस नाम से हम कनेक्ट कर रहे हैं उस कंप्यूटर से और हम उससे गाने सुन रहे हैं। तो उसके बाद बोला गया कि कुछ लोग गाने सुनाने के लिए पैसे देने लगे। उनके नाम के साथ बोला गया कि चलो ये कमर्शियल है तो क्यों ना उसके नाम के साथ कॉम लगा दिया जाए। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई हम तो फ्री में देंगे, तो बोला गया चलो ये ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी कर रहा है, एनजीओ, इनके नाम के साथ ऑर्ग लगा दिया जाए। तो धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमारे पास 2 गांव ऐसे आ गए जहाँ पे कि किसी के भी कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है और कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक नाम हो गया, नाम के साथ एक साथ में हमें एक्सटेंशन भी है कि कॉम, जिससे पता चल जाए कमर्शियल है, और ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेटिव है तो इन्फो हो गया, .in है तो इंडिया हो गया। ये सिर्फ 2 गांव की कहानी है। फिर ये बात फैल गई जंगल में आग की तरह, हर गांव वाले अपना अपना कंप्यूटर लेके आने लगे, शहर का शहर। अब आपस में क्या हुआ कि पूरे शहर में, गांव में, पूरे कंट्री में कहीं किसी के भी, जिसके भी पास भी नाम है, जिसका भी नाम आपको पता है, आप एक्सेस करो। अब गाना शेयर कर रहा है, मूवी शेयर कर रहा है, एक पेज शेयर कर रहा है, पीडीएफ शेयर कर रहा है, हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और बाद में बोला गया कि चलो ये जो इतना बड़ा नेटवर्क बन गया उसे कुछ नाम दे दिया जाए, तो वो नाम आया इंटरनेट। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये इस तरीके से हुआ, और खैर इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर मूवी है या सॉन्ग है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, किसी ने सिर्फ अगर टेक्स्ट फाइल यूज किया है तो वो फिर HTML हो गया। तो चीजें प्रोटोकॉल वगैरह डिफाइन होनी स्टार्ट हुई, प्योर टेक्निकल हो गया। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का यही है, सारे कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, हर कंप्यूटर का एक नाम है, कोई भी कंप्यूटर को हम कैसे एक्सेस करें इसके लिए एक डोमेन नेम जिसे हम बोलते हैं, और डोमेन नेम कुछ नहीं है, बस एक नाम है जो कि हम याद रख सके, ह्यूमन रीड कर सके। एक्सटेंशन जो .com वगैरह कुछ नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है कि ये डोमेन नेम किस तरह का है, क्यों यूज हो रहा है। वैसे वो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता, इवन कोई हमें रोक नहीं सकता है कि एक एनजीओ के हम .com भी ले सकते होते हैं। पर ये वही कहानी है कि बस ऐसा बोला गया होना चाहिए। तो डोमेन का कॉन्सेप्ट यही है कि एक कंप्यूटर जो रीड कर सकता है, कंप्यूटर का जो एक मशीन में जो एक है, एक एड्रेस है, आईपी, वो हम याद नहीं रख सकते हैं, तो एक ट्रांसलेट कैसे होगा, वो एक ट्रांसलेशन है, एक डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, वही है डोमेन। और ये नेचर ऐसा है, इस तरह से नेटवर्क होकर के आया और बीच में उस तरीके से कमर्शलाइज नहीं हो पाया, कोई एक गेटवे नहीं था कि आज सेंसर बोर्ड और लोगों को प्रॉब्लम है कि हम कंटेंट कैसे शेयर करें। या आज जो देख रहे हो कि इतना ओपन है इंटरनेट, जिसपे कि किसी का कंट्रोल नहीं है, या फिर कोई एक कंट्री, नॉर्मली वैसे चाइना वो डिफरेंट वे में कर रही है, खैर वो अलग चीज है, वो एक आउट ऑफ वे जाके करना है। पर नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि किसी का एक्सेस नहीं है, किसी के पास नॉर्मली इंटरनेट पे जो चाहे जब चाहे जहां से जो डाल सकता है, कर सकता है। इस वजह से है कि लोगों ने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया और इस तरीके से एक नेटवर्क हुई। अब आप बोलोगे कि यही कि आपस में जो वायर कैसे लगाएंगे, गांव वाले की ही चीजें जो गांव वाले ये कर रहे थे, अब एक टाइम आएगा ना जब कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, वायर खरीद के लगा सकते हैं एक गांव से दूसरे गांव में, तो वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट आया। तो ये जो हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वैसे लोग बीच में आए, उन्होंने फाइबर केबल्स बिछाया रोड के नीचे, उन्होंने बोला कि चलो मैं प्रोवाइड करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर को, विलेज को। फिर आई चीजें कि अंडर वाटर जो है इतने इतने उसके यूएसए से इंडिया ये सब कैसे कनेक्ट होंगे, तो अंडर वाटर जैसे वायर बिछाना था, तो एक बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने ऐसे किया, और इस वजह से जो कॉस्ट है इसकी वजह से वो इंटरनेट के लिए हमसे पैसे ले रहे होते हैं। पर अगर देखो तो जो नॉर्मल हम ऑफिस में लैन बोलते हैं वही चीजें वही हैं जो एक ग्लोबल लेवल पे हम कर रहे हैं, वही चीजें हैं जो कंप्यूटर एड्रेस के लिए हमने डोमेन नेम कर दिया है, वही चीजें आज भी। सच्चाई यही है कि अगर एक वेबसाइट होस्ट करना हो या मूडल जैसी कुछ होस्ट करना हो, तो हमारा लैपटॉप भी उतना ही कैपेबल है होस्टिंग के लिए। प्रॉब्लम यही है कि हमें अपलोड स्पीड जानबूझ करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काफी कम देते हैं। अगर वो सर्विस, अगर हमारे जो अभी घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका अपलोड स्पीड वैसा हो, तो हम खुद अभी जो चाहे होस्ट करें, जो वेब पेज चाहे अपने लैपटॉप से होस्ट कर सकते हैं, जो वीडियो चाहे होस्ट करवाना चाहे यूट्यूब की तरह, जिसे देखना हो देख सकते हैं। बस यही इंटरनेट है। आया समझ में राघव? हाँ जी सर, आ गया।
So normally in LAN we have direct connections, direct wires. So by default it's 100 Mbps. So, but in internet we have a lot of different router, booster, noise. So it's always slower than LAN. But now after this fifth generation or optical fiber technology, nowadays even in our internet or when we have 1 Gbps speed, and internet is just a common example of WAN. So Raghav, Understood. तो सेम इसी वैन के कॉन्सेप्ट में चाइना वालों ने क्या किया कि जैसे एक पूरे विलेज में या पूरे एक कंट्री में जो उनके वाइड नेटवर्क्स हैं, जो पूरे एक नेटवर्क था वैन का, उसको कहीं से भी जहां से भी वो कनेक्ट होंगे अदर वर्ल्ड से, किसी भी और कंट्री से, वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक फायरवॉल डाला। फायरवॉल क्या है कि वो एक तरह का बोलो कि स्नीफर या एक तरह का परमिशन सिस्टम है। अब उन्होंने क्या किया कि एक पूरे के पूरे उनका जो भी इंटरनेट का जो एक नेटवर्क है, मीन्स चाइना में जितने कंप्यूटर हैं उनके जितने भी नेटवर्क होंगे, उसमें जो भी ट्रैफिक होगा जो आउटसाइड वर्ल्ड से आएगा उसको वो स्नीफ कर सकते हैं, उसे वो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंक्रिप्शन ब्रेक कर सकते होते हैं। नॉर्मली पब्लिक में हमारे पास होता भी नहीं है वैसा, ये काफी ज्यादा इनकी इंक्रिप्शन की जिनके पास अवेलेबल होते हैं ब्रेक कर सकते होते हैं। और उन्होंने इस तरीके से क्या कर रखा है कि एक ग्रेट चाइना वॉल उन्होंने फायरवॉल क्रिएट कर रखा है जिससे पूरी तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते होते हैं। सो उनके केस में एक पूरी चाइना के लिए एक वैन है जिसका कि उन्होंने एक सिंगल गेटवे प्रोवाइड किया है। मैं सिंगल गेटवे करने का मतलब जो भी उनके पास कंट्रोल्ड वे है जहां पे भी वो कंट्रोल कर सकते हैं वही गेट उन्होंने प्रोवाइड किया है आउटसाइड वर्ल्ड के कनेक्शन के लिए। यही कारण है कि उसे हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं और चाइना इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता होता है अपने डोमेस्टिक जो भी इंटरनेट के ट्रैफिक से लेके हर कुछ को। सो उस टाइम में बोल सकते हो कि पूरे चाइना का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कंप्लीट एक वैन भी है और इंटरनेट भी है सेम टाइम में। So now we will discuss about topology. So topology is mainly a physical way of connecting one computer to another computer. So suppose if we have 4 or 5 computers and we have to connect all computers together, then we have to think about a different way, which way we should connect and advantage and disadvantage. So in computer networking, we have 5 basic network structure. One is star topology, bus topology, ring topology, mesh topology, and tree topology. In star topology, we provide a central computer called hub. And from that hub, this centralized part is connector or hub. And from that hub, we will provide different wires and we will connect different computers to that hub. So that wire that's connecting different computers we will call nodes. So normally in our home, Wi-Fi connection or Wi-Fi network is just an example of star topology. So we have one router Wi-Fi and we have 2-3 laptops, one desktop, one mobile or tablet. We are connecting to this centralized system. That's a star topology. And based on this image, you can see it's look like a star. That's why it's a star topology.
So the main advantage of star topology is it's very easy to use. So it's based on nodes. So whenever we have to add or remove, we can add or remove any laptop computer from our network. So in old time also, when instead of Wi-Fi, we have wires and one satellite router. We used to connect it using a different wire and remove that wire anytime, remove any computer, add any computer if you have a extra slot available inside hub. Then anytime you can add or remove any computer or laptop without shutting down or without affecting any system. That's the main advantage of star topology. And in this one, suppose if one wire is not working, then your all system will work. So single failure of node will not affect any network. And it's very easier. That's why all hostel or office or building or even our home, you will see this star topology network. Disadvantage, if your Wi-Fi not working, network will not work. So in our home also, if we have that type of setup where we are transferring data from our mobile to laptop, and if Wi-Fi not working, then network will not work. So it's a central place or central hub that will fail, everything will fail. Cable cost will be more. Nowadays we are using Wi-Fi, but even on in server client server configuration or even in our office we are using wires also. So you have to purchase a lot of wire. You are providing one node per computer. So anyway, or you have to purchase wires. Bus topology is a single network cable. It's also used inside office or building. Normally not used in home setup, but normally used in office where we have to cut budget or cost. So in bus topology, we provide one wire with two male connector, connect two laptop. In laptop, we provide two female connector and we connect another laptop or computer using that female connector. So this one is easiest to set up and very popular. Not now, but in 70s, 80s, it was very popular due to its very low cost setup. This one is very simple example of bus network topology. Apurva, any doubt in bus technology, bus topology? You understand the star topology? Sir, Sonali. sir, I have a doubt. Like, hello. Sonali, follow. Sir, like you told us the about repeater. So in star topology, can we say that hub is the repeater? Yes, exactly. Okay, sir. So even sometime, suppose if in repeater we have only 6 slot and we have to use 12 computers or more than 6, that time in one node, we will use 5 computers to connect to one router, and in 6 slot we will use one more router. That router will work now as a repeater. And using other 5 slot, we can connect 5 more computers. Okay, sir. And also in star topology, suppose sometime if in building you are providing internet connection to some other neighbor or flatmate or someone, that time you can also provide rules. Means if you want to share only 2 Mbps of speed, or if you want to provide only 30 GB of download capability, that also you can provide in repeater. Okay. It's
In computer language, router, we use word like hub, intelligent hub, or intelligent system, centralized system. Okay, sir. The main advantage of bus topology is it's very reliable, but it's very simple to configure. It's not require any external hardware like hub or router, and easy to understand, cost effective. It's required the least amount of cable to connect. Main disadvantage is heavy network traffic can slow a bus considerably. Each connection between cables weaken the electric signal. So whenever you are connecting any computer in bus topology, that time you are introducing noise also. And when any computer inside bus network consuming that traffic or internet, then it will also slow down. Means it will also consume that signal, and due to this, next computer will get less amount of signal. Next one is ring topology. In ring topology, the network cable passes from one node to another until all nodes are connected in the form of loop or ring. Transmit in only one direction, using LAN and WAN. This one is the image. So in one computer to another computer, at last it will look like a loop or circle. That's why it's ring topology. So normally not used. Advantage is it can be easily extendable and can be used in long distance. But the main disadvantage, even if any computer, if it's not started or if it's failed to start or due to any hardware problem, then the whole system will break down. If you are adding or removing any system from this network, if you are adding any network, you have to remove this loop and add that system inside this loop. Or if you are removing that time, also you have to remove that loop. So without shutting down complete network, you cannot add or remove. In mesh topology, it's a random. Whatever way you want, just get one wire, put RJ45 plug and connect it. Mesh topology is general topology for wide area network, and normally it's look like this. In this one, if you will see, it's a building network. It's a normal LAN network, building 1, building 2, building 4, building 3. These are LAN networks, not normal computers, and connected to each other. So in this one, first we have LAN. LAN network maybe star topology, mesh topology, or ring topology. And again, we are connecting this LAN using mesh topology. So inside building 1 network, building 2 network, building 4, building 3, or building 5, we may have a different topology network. And again, interconnecting using mesh prototype. Advantage, reliability is very high, as there are always alternate paths. So mainly we are using more than one wires, more than one nodes are always available. So it's very reliable. So
if any nodes not working or fail, that time it will use another node. So when reliability is mattered, at that time best of topology is one of the best topology. Cost of installation and maintenance will be very high due to a lot of wires. And I think last one, tree topology. Tree topology connect one star network to the other star network. So as I discussed with Sonali, when we are using a router as a repeater and we are connecting two star network to each other, that time it's a tree topology. It's extension of star topology. So in this one, we have two network, two network based on star topology, and it's connected to one wire or bus. Here we are using two routers connected to each other, and we extended two different star topology network. And after we extended two star topology network, it's looking like a tree topology, and that's why we are calling it a tree topology. So tree topology is nothing. It's just extension of star topology. Akriti, any doubt? No, sir. Advantage. Each segment is provided with dedicated point-to-point wiring to central hub. So normally our central hub is intelligent unit, means it can detect any errors and it can also provide some correction. So normally it's the same thing like nowadays we are using router, Wi-Fi routers. So if one segment is damaged, other segment will work. So if we have two different star topology network, one with 5 computer, one with 5 computer, and if anyway the main connector or main wire between the two star network is down, then that 5 system and that 5 system both will work. One router 5 computers may not be able to connect to another router 5 other computer, but that 5 network will be able to communicate with each other, and another 5 will also be able to connect to each other. Expansion of network is possible and easy. So using this star, we can again extend one more router. Again, if we can use one slot to extend another segment. So using this one, we can go on. Means 5, 5, 5, 5, 5, 5. In our office, we are using exactly same tree topology. Apurva? Apurva, can you explain our office topology from starting to end? Okay, so disadvantage, as multiple segments are connected to a central hub, the network depends heavily on the hub. So if hub fails, everything will fail. Hub means suppose in our normal 5 computer hub, it fails. So all 5 computer will be isolated, means not able to communicate with each other. Maintenance is not easy. So every time you are going to extend that segment, that time you have to purchase one new router. After some time, tree topology may be difficult to manage. So
Now we have networks, computers. Computer can talk to each other, can communicate with each other. Now we have to define something so they can communicate same way, same language. For that purpose, we have protocol. So in protocol, we define the rules, how one computer will call another computer, how they will communicate, and how they will find out computers. So suppose if in our office network, I have to my computer need to connect to Raghav computer or Apurva computer. Somehow it should be capable of finding the right correct laptop or computer, that address. How it will find that address? How we will define that computer address? How it will download any file? How my computer will identify if it's a normal HTML file need to display or it's PDF need to download. Such type of things come under protocol. Normal level means basic level. We have 5 different type of protocols. One is TCP, transmission control protocol. One is IP, internet protocol. One more is HTTP, hypertext transfer protocol. FTP, file transfer protocol, and HTTP, hypertext transfer protocol. But it's a layer of security. It's not exactly only 5, but it's a main 5, major 5 protocol that we will discuss now. So TCP part is transmission control protocol. So when one computer will communicate with other network, how it will transmit that data bundle, data file, data packet, how it will transfer that one, that type of protocol come under TCP. When it will transfer anything, any file, any data, any bytes, that time how it will find out that address, that laptop or computer particular address, that's come under internet protocol, IP. IP is nothing, it's address, machine readable address. When we are accessing any web page, normally Facebook, Times of India, Economic Times, or any web page, or access.health.org. In that web page, we provide a image, text, and in text also, sometimes it's headline. Inside headline also, we have different size of headline, different type of image, links. When we are clicking on links, one page should be open, a different link should be open. That type of rules, how it's defined, how someone able to view that page inside browser, how browser will parse that JavaScript, or how this browser will communicate with any server. For that part, it's mainly HTTP, hypertext transfer protocol. And sometime we have to share files. Maybe a different server, or maybe inside any different LAN computers. That come under file transfer protocol. But in the web browser, a lot of time we purchase a lot of things using e-commerce website, Flipkart or Amazon. In Amazon or Flipkart, sometime we order using COD, or sometime we provide credit card information. So in HTTP, when we are providing credit card information or any personal information, that's sensitive and anyone can access that one. Access means after we are clicking on submit button,
it's changed into data and it's transferring using any wire or Wi-Fi. So suppose if someone from our office using same Wi-Fi purchasing something or submitting any form or data, and if I am inside same Wi-Fi or same network, I can easily sniff using online sniffer or any software. I can easily sniff that data and I can easily access that information, credit card information or personal information. To prevent such type of thing, we use encryption and not exactly file level encryption. It's transport level encryption. For that purpose, we have HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. So whenever in browser, if we are seeing in left side, if we have one view of lock, and instead of HTTP, it's mentioned HTTPS, then it's a secure site where our credit card information or our personal information may not leak between network, between communication. It may leak after from a database or server, but between communication, it will not leak. For that purpose, we have a hypertext transfer protocol secure. So in TCP transmission control protocol, it's provide reliable transport service. So it's ensure that message sent from sender to receiver are properly routed and arrive at the destination. But for that destination, it will use IP protocol. So how this TCP converts, it's too technical, but I will use a very generic concept. So normally TCP converts message into a set of packages, a small package. At the source, which are then reassembled back into message at the destination. So first, we are breaking our message into packet. In packet, we are providing some identification. So suppose if we are somehow breaking our message and we are not providing any identification mark, then how we will reassemble it back at destination? So we are providing identification mark, and also on each packet we are providing address also, address marking. So every packet independently will go to destination, and at time based on that ID we will reassemble that. For doing such type of things, we need TCP protocol. So what is IP protocol? IP protocol define how computer will connect to each other, means computer address, how it will communicate. Communicate means at address level. So suppose if you are using any, if you are sending any greetings card or Rakhi or anything using Indian Post, first part is your message or your envelope or your Rakhi or that greeting card. And one part is address on top of that envelope. So this one is a top level. Yes. TCP is how that envelope or message will reach using WAN or Indian Railway, it's reaching to destination. That's the part where TCP and the address exact how means which person